Hello everyone, very good morning. So we are back with our daily current affairs session and let's just begin with today's analysis. So the first news article that we have today is related to something important that a union minister has said. Let's just try to understand, and this is related to terrorism. So, without any delay, let's just try to understand this particular news. So, UAPA necessary to act against terrorists. Okay, so we will try to understand this news. The union minister said it was necessary to have certain laws like the Unlawful Activities Prevention Act so that action could be taken against terrorists and those who behave other people. So we know recently in Udaipur, there was this incident that a tailor was beheaded. Okay. So इस कॉन्टेक्स्ट में ही एक यूनियन मिनिस्टर ने बोला है कि ऐसे कुछ लॉज होने चाहिए जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है यूएपीए ताकि ऐसे एक्शंस लिए जा सके उन लोगों के ऊपर जो ऐसे गलत काम करते हैं ताकि जैसे किसी का सर काट दिया which is a very much big criminal offense तो ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए ऐसे लॉज जो है वो बनाने चाहिए ओके so what is actually unlawful activities prevention act we will try to understand this in detail and then we will also see that what are the different amendments that has been taking place in this particular act okay so UAPA is aimed at effective prevention of unlawful activity associations in India. So इसका एम यही क्या है एक ही एम है इसका मेनली बड़ा कि जो प्रिवेंशन है अनलॉफुल एक्टिविटीज का उसको पूरी तरीके से इंडिया में रोका जा सके Its main objective was to make powers available for dealing with activities directed against the integrity and sovereignty of India. So मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसी पावर बनाना जो कि ऐसी एक्टिविटीज जो इंडिया के अगेंस्ट है इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है उनको उनके उनसे डील करने के लिए उनको खत्म करने के लिए पावर्स बनाना So it is an upgrade on the Terrorist and Disputed Activities Prevention Act, which is TADA, which was allowed to lapse in 1995, and Prevention of Terrorism Act, which is COTA, was repealed in 2014, 2004. Sorry. Okay, so nothing explainable here. It was originally passed in 1967 under the Congress government led by former Prime Minister Indira Gandhi. So it was formed in 1967. Very important. Okay, you have to remember this. It was formed in 1967. So till 2004, unlawful activity refers to actions related to succession of and cession of territory. Following the 2004 amendment, Terrorist Act was added to the list of the offense. So initially, initially जो अनलॉफुल एक्टिविटीज थी उसका मतलब सिर्फ वो इतनी चीज को रेफर करती थी कि कोई टेरिटरी को जब्त कर लिया या कोई ऐसा काम कर दिया उससे रिलेटेड बट 2004 में जब अमेंडमेंट हुआ तो ये जो लिस्ट है ऑफेंसेस की इसमें टेररिस्ट एक्ट भी ऐड कर दिया गया Now, what are the major features for giving designation of terrorists to a particular organization?
The center had amended UAPA 1967 in August 2019 to include the provision of designating an individual as a terrorist. So ये जो amendment हुआ 2019 में, उसके बाद ये प्रोविजन ऐड किया गया कि अब किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट जो है वो डेजिग्नेट किया जा सकता है या टेररिस्ट का टैग दिया जा सकता है, बल्कि जबकि उससे पहले जो टैग था वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था. So before this amendment, only organizations could be designated as terrorist outputs. तो इससे पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही ये टैग दिया जाता था, but now this tag is also given to individuals after the amendment of August 2019. Section 15 of the UAPA defines a terrorist act as any act committed with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security, economic security of sovereignty of India, or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country. So जो section 15 है इस particular act का, उसके हिसाब से टेरर एक्ट कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि जिसकी इंटेंशन हो कमिट करने की कि वो किसी को थ्रेट करे या इंडिया की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को या सोवरेनिटी को थ्रेट करे. तो ऑल दीज थिंग्स देन आर कॉल्ड एज what? Called as the terrorist act. The original act dealt with unlawful acts related to suppression. Anti-terror provisions were introduced in 2004. So as initially I told you, it was in 2004 when it happened. Now, who makes such designation? मतलब कौन ये decide करेगा कि okay, this particular person or this particular organization must be added to the list of terrorists, या फिर ये particular जो वर्क है या ये जो क्राइम किया है ये टेररिस्ट क्राइम है, ये कौन डिसाइड करेगा? Now let's try to understand. The UAPA after 2019 amendment seeks to empower the central government to designate an individual a terrorist if they are found committing, preparing for, or promoting or involved in an act of terror. So now who is responsible? The central government. You have to remember this. This is very important that according to this act, it is the central government which is empowered to designate an individual as a terrorist. Okay? A similar provision already exists in Part 4 and 6 of the legislation for organizations that can be designated as a terrorist organization. Okay. Now, how individuals are declared terrorists? The central government may designate an individual as a terrorist through a notification in the official gazette and add his name to the schedule supplemented to the UAPA bill. Central government क्या करेगी? Notification, जो official gazette होगा उसमें एक notification निकाल सकती है, and they will add the name of that particular individual to the schedule. The government is not required to give an individual an opportunity to be heard before such a designation. So ऐसा नहीं है कि कोई हियरिंग होगी या फिर जो इंसान है, जो बंदा है, उसको चांस मिलेगा कि भाई तुम आके अपनी
बात को रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. If the government feels कि इसको हमें डालना है लिस्ट में, they can put it directly. कोई इंडिविजुअल से पूछने की, उसकी बात सुनने की, ऐसा there is no provision for. At present, in line with the legal presumption of an individual being innocent until proven guilty, an individual who is convicted in the terror case is legally referred to as a terrorist. जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि इनोसेंट है इंडिविजुअल, तब तक वो लिस्ट में रहेगा ही, तब तक वो टेररिस्ट ही माना जाएगा. एंड जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि द पर्सन इज नॉट फाउंड गिल्टी, उसके बाद ही लिस्ट से नाम हटेगा, तब तक ही विल बी कॉल्ड एज गिल्टी. So while those suspected of being involved in terrorist activities are referred to as terror accused. Now, what happened? What actually happens when an individual is declared a terrorist? We will try to look at that. The designation of an individual as a global terrorist by the United Nations is associated with the sanctions including travel bans, freezing of assets, and embargo against procuring arms. This I told you in one of the class, I think last month, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, सॉरी यूनाइटेड नेशंस है, वहां जब किसी भी इंडिविजुअल को या मतलब when they are designated as a criminal related, they have done some kind of crime related to terrorism, then उनका क्या क्या हो जाता है, उनका जो ट्रैवल है वो पूरी तरीके से बैन हो जाता है, जो भी असेट्स है वो सब फ्रीज हो जाते हैं, आर्म्स वगैरह, वेपन्स वगैरह they cannot carry. So all these things happen. Now the UAPA, however, does not provide any such detail. But जो हमारा ये एक्ट है इंडिया का UAPA, इसमें we don't have any such act related to this. It also does not requires the filing of case or arresting individual while designating them as terrorists. So in UAPA, it is also not the case that the individual has to be arrested. तब उसको labeling कर रहे हैं that this particular person is now a terrorist. Now तो arrest की जरूरत है, नहीं filing a case is also required. Now removing the terrorist tag. So suppose you have to remove this particular tag from somebody, then what will be the procedure? The UAPA gives the central government the power to remove a name from the schedule when an individual makes an application. So ये भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में है कि कब और कैसे वो कोई नाम जो है वो हटा सकते हैं from this particular list. The procedure for such an application and the process of decision making is decided by the central government. क्या प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन का, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, all these things are decided by the central government only. If an application filed by an individual declared a terrorist is rejected by the government, the UAPA gives him the right to seek a review within 1 month after the application is rejected. So अगर suppose उसने जो है एप्लीकेशन दी इंडिविजुअल ने जिसको टेररिस्ट बोला गया है, डिक्लेयर किया गया है, नाउ उसकी जो एप्लीकेशन है वो मानिए रिजेक्ट कर दी गवर्नमेंट ने, तो जब रिजेक्ट हुई है उससे 1 महीने तक उसके पास मौका होता है कि वो रिव्यू करवा सके अपनी एप्लीकेशन. The central government will set up the review committee consisting of a chairperson who will be a retired or sitting judge of the High Court and 3 other members. Okay. So जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे जिसमें कि एक चेयरपर्सन होंगे जो कि रिटायर या सिटिंग जज होंगे हाई कोर्ट के, एंड 3 मेंबर्स और होंगे.
The review committee is empowered to order the government to delete the name of the individual from the schedule that lists terrorists if it is considered the order to be frauded. और अगर कमिटी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, नाम नहीं जाना था इस पर्टिकुलर लिस्ट में, the person has not done something which is क्रिमिनल एक्टिविटी, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी एंड देयर इज नो सच बिग थिंग दैट इज बीइंग डन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन और गलती से नाम आ गया है, तो फिर जो कमिटी है वो ऑर्डर दे सकती है गवर्नमेंट को कि इस बंदे का नाम लिस्ट से हटा दिया जाए. Apart from these two avenues, the individual can also move the courts to challenge the government's order. इसके अलावा जो इंडिविजुअल है वो कोर्ट में भी जा सकता है, अपील कर सकता है, चैलेंज कर सकता है गवर्नमेंट के ऑर्डर को. Now with this we come to an end to this particular news, and now we have another news. Let's just try to understand. Now recently we are seeing that there is a lot of fall in rupees as compared to the dollar. So let's try to understand this, and what are the reasons behind this, we will look into that. The Indian rupee has reached an all-time low against the US dollar. Now what are the details, we will try to understand. The Indian currency has weakened past the 79 rupee mark against the US dollar. Okay, 79 is now the mark. So experts actually predicting that the rupee will further weaken in the coming days. तो अभी experts का कहना है कि ये जो रुपए है against US dollar अब और भी ज्यादा गिरेगा. The International Monetary Fund expects the rupee to weaken past the 94 rupees to a dollar marked by financial year 2018 and 29. तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उनका कहना है कि 2028 और 29 तक तो जो 94 रुपीज है वो $1 के बराबर हो जाएगी. सो बहुत ज्यादा रुपी जो है वो गिर जाए. नाउ व्हाट इज दिस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रुपी एंड फॉरेक्स रिजर्व. देखो फॉरेक्स रिजर्व एक्चुअली क्या होता है, इट इज द फॉरेन करेंसी असेट्स दैट अ कंट्री हैज. ओके, सो हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है उससे डिपेंड करता है कि रुपए की वैल्यू क्या हो. So let's just try to understand this. The Indian rupee has experienced a constant decline in its value since the start of 2022, losing more than 6% against the US dollar. So 2022 के beginning से ही there is this decline in the value of rupee. Now, forex reserve of the country has also declined below the $600 billion mark. जैसे जैसे फॉरेक्स रिजर्व कम होता जाएगा कंट्री का, वैसे वैसे रुपये की वैल्यू भी कम होती जाएगी. So this is the relation. Forex reserve of India witnessed an all-time high of $642 billion in September 2021. And there has been a drop of more than $50 billion since then. Okay. The decline in the forex reserves is said to be due to measures undertaken by the Reserve Bank of India to support the rupees, but the RBI officials have said that the decline is because of a fall in the dollar value of assets held as reserved by the RBI. So ये actually क्यों हो रहा है? क्योंकि जो RBI है, it is trying to have some measure in order to support rupees. But they are also saying that in order to have this fall in the dollar value, so ये जो this imbalance है कि rupees जो है वो बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा है, that is also because of. Now, for example, if a portion of the reserves are in euro, and if the value of the euro declines against the dollar, this would result a drop in the value of. So अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में मान लो यूरोज रखे
और अगर यूरोस की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो रही है अगेंस्ट डॉलर, तो ऑब्वियसली बात है कि फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो डिक्लाइन होगा, क्योंकि हमारे पास यूरो है, यूरो डिक्लाइन हो रहा है। तो दिस इज द केस एक्चुअली। नाउ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रुपीज। क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से रुपीज की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है, कि अभी कम है अभी ज्यादा है? What are the factors that we are going to see? The value of currencies is determined by the demand and supply of the respective currency. An increase in the demand for the current increase its value. So जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, ये तो एक सीधा फंडा है इकोनॉमिक्स का, कि डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू में इंक्रीज आ जाएगा। जैसे कि हमें कोई सामान चाहिए, उसकी डिमांड बढ़ गई, बहुत लोगों को वो सामान चाहिए, तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर देंगे मार्केट में। तो इट्स लाइक दैट। Whereas an increase in the supply of the current currency decrease its value. और जब सप्लाई बढ़ जाएगी करेंसी की, जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। In advanced economies, central banks determine the supply of the currencies, and the demand for currencies is depend on the number of goods and services produced in the economy. ठीक है, सो इसमें कुछ इतना एक्सप्लेनेबल नहीं है, बट स्टिल लेट मी टेल यू। सो जो एडवांस्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो सेंट्रल बैंक है, उसमें सेंट्रल बैंक जैसे हमारे आरबीआई, तो वो डिसाइड करती है कि सप्लाई ऑफ करेंसी कितना रहेगा, एंड ऑल्सो द डिमांड ऑफ द करेंसी। जो डिमांड है वो कितनी है उसके हिसाब से सप्लाई रहेगी, एंड ये सब चीजों को देख के ही इसको इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सब किया जाता है। In the forex market, the supply of rupees is dependent on the demand for imports and other foreign assets. Okay, nothing explainable in this particular line. If there is a high demand to import a commodity, then there will be an increase in the supply of the rupees in the forex market. This will result in decline in the value of the rupees. So, agar there is high demand, अगर किसी कमोडिटी को इंपोर्ट करने की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ रुपीज। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है पैसा है, सप्लाई जब ज्यादा बढ़ जाएगा पैसे का, तो जो उसकी वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इफ देयर इज डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड अदर डोमेस्टिक असेट्स, देयर विल बी एन इंक्रीज डिमांड फॉर रुपीज इन फॉरेक्स मार्केट। सो ये जस्ट उल्टा है फर्स्ट वाले। Further, if there is an increased interest among the foreign investors to invest in India, there will be an increase in the supply of dollar in the forex market, which eventually increase the rupees value against the dollar. So क्या होगा, अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिमांड है इन्वेस्ट करने की इंडियन मार्केट में, तो जो वो बाहर से आगे इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी करेंसीज जो होंगी वो अदर करेंसीज होंगी, तो डॉलर की जो फॉरेक्स मार्केट में जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो रुपीस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ रीजंस फॉर द फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीस। तो व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से इतना जो रुपी है उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई? यूएस फेडरल रिजर्व हैज बीन इंक्रीजिंग इट्स बेंचमार्क interest rate since March 2020. This has forced the investors to pull away capital back into the US from emerging markets like India to gain higher returns. जो यूएस की फेडरल रिजर्व है, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है, तो अब जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज में लाइक इंडिया में जो पैसा लगाया हुआ था, उनको लग रहा है कि यहाँ पे कैपिटल लगाने की जगह उसको वापस लेके यूएस में ले जा रहे हैं, ताकि वहां से उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जब यहाँ से पैसा जाके वापस वहां लग रहा है, तो क्या होगा, पैसा वापस जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, तो जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होगी पैसे की, रुपए की। दिस हैज पुट प्रेशर ऑन द करेंसीज ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स and has caused their currencies to depreciate significantly against the US dollar.
एंड यही रीजन है कि इसकी वजह से जो करेंसी है उसमें डिक्लाइन आ रहा है की वैल्यू में. Now further, the value of developed market currencies like the euro and then yen has always depreciated against the dollar as the dollar index has increased by over 9%. So it's not just about rupee or any other currency, but developed market currencies में developed जो countries हैं उनमें भी ऐसा ही हो रहा है, चाहे यूरो हो चाहे कोई और. Expert points out that the RBI's decision to increase the rates in May 2022 was to defend the rupee by discouraging the swift outflow of capital from India. So जो RBI ने मई 2022 में हमने देखा कि जो रेट्स थे वो बहुत बढ़ा दिए थे. So this was actually to discourage the capital flow from India. कि इंडिया से पैसा ज्यादा बाहर ना जाए ताकि हमारा जो रिजर्व है वो मेंटेन रहे एंड जो रुपए की वैल्यू है वो कम ना हो जाए. Now another key reasons is the widening current account deficit. Now current account deficit को ऐसे समझ सकते हैं जो हमारे imports हैं जिससे कि हम पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन मनी जो आ रहा है हमारे यहाँ, फॉरेन करेंसी जो आ रहा है वो, और जो हम पैसा दे रहे हैं सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, उसका जो है गैप, उसको हम कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट. ये हमारा पैसा जा तो ज्यादा रहा है, ज्यादा हम क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे बहुत कम पैसा आ रहा है. सो उसमें जो गैप है वो दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट. The current account deficit is predicted to reach 10 years high of 3.3% of the GDP in current financial year 2023. So this suggests that India's import demand in the wake of increasing global oil price will adversely impact the value of rupee unless foreign investor invest capital into the country to fund the deficit. However, it is unlikely that foreign investor will invest capital into the country when investment yields are increasing in US. So, इंडिया का जो import demands हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा increase हो गई है. Okay, and because of this what has happened, जो रुपी है वो उसकी वैल्यू गिरती जा रही है. एंड जब तक कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक इस डेफिसिट को कम करना मुश्किल है. बट बिकॉज वी ऑलरेडी नो, वी रेड इट कि जो यूएस में इन्वेस्टमेंट जो यील्ड है वो इतनी इंक्रीज हो गई है, तो उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें. Now, high domestic price inflation in India is also a key reason for the fall in the value of the rupee. So, क्योंकि इंडिया में जो high inflation हो गया, we were reading this for so many time now कि जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, and that is also one of the reasons कि जो इंडियन रुपी है वो डिक्लाइन हो रहा है. This means that the RBI has been creating rupees at a much faster rate as compared to US Federal Reserve creating dollar. So महंगाई बढ़ेगी. So what they have to do? This means कि जो RBI है वो पैसा ज्यादा बना रही है और जो US डॉलर है वो कम बना रही है. तो ज्यादा पैसा बनेगा तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी. This difference in the This difference in the rate at which both the currencies are created also play an important role in determining the value of the rupees in the long term. तो ये जो डिफरेंस होता है कि कौन सी करेंसी ज्यादा बन रही है, जो करेंसी बहुत ज्यादा बनेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जो बहुत लिमिटेड बनेगी उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी. ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Now, what are the impact of fall in the value of rupee? A fall in the value of rupee means that the imports of the country become costlier with
which will fuel inflation. So वैल्यू जो है रुपी की जब वो कम होती है, इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट जो है कंट्री के वो महंगे हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो पेट्रोल के प्राइस हैं, जो फ्यूल के प्राइस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और भी अदर चीज है जिनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि ये इट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन, इट विल फ्यूल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को बढ़ा दे। It impacted the import-oriented industries like oil, gas, and chemicals negatively. So ये जो इससे क्या होगा, जो ऑयल गैस केमिकल ये जो इंडस्ट्रीज है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होंगी, क्योंकि जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा मनी की गिर जाएगी। वी हैव टू गिव मोर मनी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ थिंग जब हम उसको इम्पोर्ट करेंगे। दिस विल मेक ऑयल एंड अदर इम्पोर्टेड components costlier, which will fuel inflation. Okay, तो जब हम महंगे में इंपोर्ट करेंगे तो महंगे में बेचेंगे, तो हमारी कंट्री में भी महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। The fall in the value of the rupee also impacts companies which pay royalties to foreign companies for franchising in India. Okay, so nothing explainable. There will be an increased outflow of foreign portfolio investment, thereby affecting the forex reserve and the equity market of the country. जो एफपीआई होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी इनका आउटफ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व इफेक्ट होगा एंड all these things will happen in the company. Auto, real estate, and infrastructure sectors would be severely affected. Travelers and students studying abroad will have to spend more rupees to buy dollars from bank. So जो लोग ट्रैवल करेंगे फॉरेन कंट्रीज में, या जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाएंगे, दे विल आल्सो बी अफेक्टेड, बिकॉज उन्हें ज्यादा पैसे, क्योंकि जो पैसे की वैल्यू है, वो रुपए की वैल्यू है, वो कम हो गई। नाउ दे विल हैव टू पे मोर मनी, मोर इंडियन करेंसी टू गेट $1। जितना पहले देते थे उससे ज्यादा, क्योंकि जो रुपए की वैल्यू है वो गिर गई। Okay, so with this, we come to an end to this particular news also. Now we have some very important questions that we are going to read and understand and try to get the right answers. Okay. So एक बार quickly पहले मैं इसे revise करा देती हूँ आपको, what all the news that we have seen. The first news that we have seen is related to the Unlawful Activities Prevention Act, कि कैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है, एंड व्हाट ऑल दीज व्हाट ऑल आर द प्रोविजंस जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल को ऐड किया जाता है टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड इज लेबल्ड एज एन टेररिस्ट। व्हाट आर द डेजिग्नेशन, देन डेजिग्नेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अगर उसको रिमूव करना हो डेजिग्नेशन से तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ऑल दिस। The next news that we saw was related to the decline in the value of Indian rupee, कि कैसे डिक्लाइन होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, एंड कैसे डिक्लाइन हो जाता है, क्या रीजंस रहते हैं मार्केट में कि जिसकी वजह से पैसा जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। ऑल्सो कैसे जो इन्फ्लेशन है कंट्री में वो इम्पैक्ट होता है, प्लस वो इम्पैक्ट करता है जो डिक्लाइन है इन दी रूपी। So all those things we saw in this particular news. Now we have come to an end to our news, and we are moving towards to have some very important questions. Now find the correct options. The Polar Satellite Launch Vehicle is a 4-stage rocket. We were seeing this, I think, in the last lecture or before that. Also, this is in news these days. That is why I have brought this question to you. Okay, the second statement is PSLV Orbital Experimental Module, which is shortly called as POEM, is a platform that will help perform in-orbit experiments. Statement 3, POEM will derive its power from solar panels mounted around the PS4 tank and a lithium iron battery. Now you have to find the correct option. Okay, correct. So options are 1 and 2 only.
2 and 3 only, 1 and 3 only, and 1, 2, 3. Now you have to tell me which is the right option. So D is the correct answer, which is all the 3 are right options. Now why? Let's just try to understand. The statement 1 is correct because the PSLV is a 4-stage rocket that alternately utilize solid liquid propulsion system. This I will explain you in one of the classes, as I told you. So I will explain you all these things. Propulsion system क्या होता है, liquid solid, all these things PSLV का भी और detail में एक बार discuss कर लेंगे. वैसे we have seen it, but we will take it once again. So statement 2 is also correct. The PSLV orbital experimental module is a platform that will help perform in-orbit experiments using the final stage of ISRO's PSLV. So this is also correct. Statement 3 is also correct because Pearl will derive its power from solar panel mounted around the PS4 tank and lithium-ion battery, and it will navigate using 4 sun sensors, a magnetometer, gyros, and nevisy. So all these things we will be understanding. So all the 3 statements are correct. Okay, so the next question that we have is Snake Island, recently seen in the news, is a part of Japan, Vietnam, Ukraine, or Sweden. So tell me, Snake Island is a part of which of the following country? Okay. So C is the correct answer, that it is a part of Ukraine. Okay. So you can identify this is Ukraine. Okay. Snake Island, which is also referred to as Serpent Island. Gemini Island is an island located in the Black Sea and belongs to Ukraine. So it is located in Black Sea, which belongs to Ukraine. The Snake Island lies close to the mouth of River Danube, and this which delineates Romania's border with Ukraine. Okay, so it is actually lying at the mouth of River Danube, which delineates Romania border with Ukraine. So there is, we have Romania. Okay. Okay, so with this, we come to an end to our daily current affairs session. And I hope it was some help. It was helpful to you all, and it gave you some knowledge. With this, we come to an end to the session, and I will meet you very soon tomorrow with a new daily current affairs session. Till then, keep studying, work hard, and keep